So we are doing habit number three. Put first things first. It's about priority. So we are doing going from being dependent to independent, emotionally, physically, mentally, socially, in all forms, where we are. So we are generally है ना अपन अपनी identity, अपनी self worth, our decision making, everything we depend on our situations and circumstances. So now we are learning how we can be independent of our circumstances and situations, and we become independent where we are by practicing habit number 1, 2, and 3. So habit number 1 was being proactive, which is focusing on things which are in our control, and not focusing our energy on things which we cannot control, which is not in our area of influence, which is being proactive, uh, only acting in areas which we can do something about, and not going in complaining zone and a victim mode and feeling helpless. So habit number 2 is begin with the end in the mind. In this, we learned about visualization and how we have to define what we really want in our life, the direction of life, what we want our lives to be about, what are the values which are important to us, which we will keep as a map in our head, and we created a personal mission statement for ourselves. Like I created a personal mission statement for me that it will not be about Richa, and and I will not give significance to the identity of Richa. She may be feeling good or bad. It's not about that. It's about being compassionate, being being empowered no matter what. So whatever empowers, I will take decision according to that, and not from the situation what I like and what I don't like, what feels good and what doesn't feel good. And the third was being kind, compassionate, empathic, and empowered, um, and coming from the mentality that sabka mangal hoye, which is well-being for all. Habit number 3 is put first thing first. So this is about prioritizing, and we will learn about it now. Principles of personal management. Things which matter most must never be at the mercy of things which matter least. अपन ने वन थिंग जिसने पढ़ी हुई है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर है. Uh, will you take just a moment and write down short answers to the following two questions? Your answers will be important to you as you begin work on habit number 3. Question number 1. What one thing could you do, something you are not doing now, that if you do, if you did it on a regular basis, would make a tremendous positive difference in your personal life? Um, you have to write it now. Okay. And Gaurav ji, you also. Gaurav नहीं है, मेरे को दिख नहीं रहे, names नहीं दिख रहे. एक बार. कौन है कॉल पर? Garima. गरिमा and Naveen. Naveen. Naveen ji, you have to write this now. What is the one thing you can do, something you are not doing now, that if you did it on a regular basis would make a tremendous positive difference in your personal life? Exercise, gym. मेरा भी यही है यार, माय गॉड. मैं यही सोच रही थी एक जिमिंग शुरू करनी है, इन एक सप्लीमेंट्स एंड डाइट, टेकिंग केयर ऑफ वो डाइट एंड हेल्थ. बहुत मुश्किल चीज है, वो हो गया तो कोई चेंज हो कोई जाएगा. कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है. We will learn how to do it. We just have to keep it in the mind. Yes, Garima. Yes, reading newspaper. Oh, and what will you get out of it? See, once you read, you know You all the know all current the affairs Mm. and you're aware of everything. So, I want to do that, but somehow that is not, I'm not giving it 100%. ठीक है. What one thing in your business or professional life would bring similar results? Of What is the course, thing you could do in your business on a regular basis
such that that will make a tremendous positive difference in your business life, career. मैंने इसका वीकली स्केड्यूलिंग शुरू करने का सोचा था कि मैं पहले से इंटेंशन क्रिएट करूंगी कि आज मैं क्या करूंगी, एंड पूरा माइंड मैप बनाना, पूरा मैप बनाना कि मुझे क्या क्या करना है बिजनेस में. नहीं, प्रॉब्लम इस क्या है, हम चालू करते हैं बट बीच में स्टॉप हो जाता है. सर ने जब फर्स्ट 2-3 वीक्स जो शेड्यूलिंग किया था, बहुत जोश था, बहुत चला, एक बहुत दो महीना बाद में बैंड बज गया. ना कुछ नहीं फोर होता एम ये हो रहा है, ना एट एम हो रहा ये है. ये वाली बुक आपको सेंटर कर देगी इस चीज के लिए. अभी तो आप सिर्फ प्रेजेंट हो जाओ. व्हाट इज दैट वन थिंग इन योर बिजनेस दैट यू कैन डू दैट विल हैव अ ट्रेमेंडस पॉजिटिव डिफरेंस इन योर बिजनेस मुझे एंड लगता है परफॉर्मेंस. फाइव फाइव बिल्डिंग ब्लॉक्स चालू करने हैं. एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट आई गेस. हाँ, तो 4 AM क्लब चल रखा है मेरा, उसमें आप आ जाओ. 4 चल रहा बजे. है हाँ, देयर इज अ ग्रुप. तो हम 4 AM ऐड कर सबको दीजिए ना. आते हैं. आप मुझे पर्सनल मैसेज करना, मैं आपको ग्रुप लिंक दे दूंगी. ठीक है, श्योर. थैंक And यू. weekly scheduling is something I am looking for, which I can do in my professional life, which will make a tremendous difference. I will do the intention setting and I will create goals and results. Ki is then ye, this is one thing I will do today, this is one thing I will do. I think that will really make a huge difference in overall of my life. So weekly scheduling. We will come back to these answers later, but first, let's put habit number 3 in perspective. Habit 3 is the personal fruit, a practical fulfillment of habit number 1 and 2. Habit 1 says you are the creator, you are in charge. It's based on the 4 unique human endowments of imagination, consciousness, independent will, and particularly self awareness. So, habit number 1 में था कि आप creator हो, एंड अभी आपके हाथ में जो कंट्रोल में है ना, आप उसको इतना एनलार्ज कर लो, उसी में काम करो. उन चीजों पे फोकस मत करो जो आप नहीं कर सकते, और अपनी इमेजिनेशन में आपको क्या चाहिए वो क्रिएट करो, और बस जो आप कंट्रोल में उसको करते जाओ. तो उससे आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा. That empowers you to say that's an unhealthy program I have given from my childhood, from my social mirror. I don't like that ineffective script. I can change. तो ये हैबिट नंबर 1 है कि आप उन्हीं चीजों पे काम करोगे ना, तो आपकी जो स्क्रिप्टिंग है बचपन की, हेल्पलेसनेस की, विक्टिमनेस की, मैं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में से गायब हो जाएगी. Habit number 2 is first and mental creation. It is based on imagination, the ability to envision, to see the potential, to create with our minds that we cannot at present see in our eyes. ये बोल रहा है हैबिट नंबर 2 इज अबाउट क्रिएटिंग अ विजन फॉर योरसेल्फ. जो अभी आपको आंखों से नहीं दिख रहा, वो आप अपने दिमाग में क्रिएट करो. एंड कॉन्शियसनेस, द एबिलिटी टू डिटेक्ट आवर ओन यूनिकनेस, पर्सनल मॉरल एथिकल गाइडलाइंस. तो इसमें अपने पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बताया था, अपनी वैल्यूज रखी थी कि दीज वैल्यूज आर मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन एनीथिंग एल्स, एंड वी विल टेक डिसीजन फ्रॉम दोज वैल्यूज which we can most happily fulfill it. It is the deep contact with our basic paradigm and values and the vision of what we can become. Habit number 3 then is the second creation. So अपन ने क्रिएट किया था कि जो दुनिया में हर चीज 2 बार क्रिएट होती है, एक तो दिमाग में और एक फिजिकली. सो हैबिट नंबर 2 है दिमाग में क्रिएट करो कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्रिएट करना है, किस वैल्यूज से आपको लाइफ जीनी है, व्हाट वैल्यूज आर मोर इम्पोर्टेंट टू यू. जैसे मेरा सेंटर आया था कि मेरा सेंटर है अबाउट माई आइडेंटिटी, तो मैं अपनी हर डिसीजन अपनी आइडेंटिटी बेसिस पे लेती हूँ, है ना. मेरे देखने का तरीका ही सेल्फ सेंटर्डनेस है. तो उधर मैंने क्रिएट किया कि नहीं, मैं अब चीजें देखूंगी फ्रॉम कंपैशन, फ्रॉम कि एवरीबडी इज इक्वल. इट्स नॉट अबाउट जस्ट रिचा रिचा रिचा. इन अ रिलेशनशिप, if I want something, the other person can also want something. So I will take wants of both person equally in my looking, in my perspective. तो वो मैंने मेंटली क्रिएट किया था, राइट. तो यू हैव टू सी कि व्हाट यू विल क्रिएट मेंटली इन योर लाइफ. वो आप चैप्टर करोगे गरिमा तो आपको समझ में आएगा, बिकॉज इट्स समथिंग वेरी डीप. तो आप रिकॉर्डिंग से कर लेना.
ठीक और है। नवीन जी आप भी कर सकते हो तो प्लीज, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। Sure. हैबिट 3 इज अ सेकंड क्रिएशन, मतलब अभी तक अपन ने देखा था कि हैबिट नंबर 2 क्या किस बारे में, लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन चूज करना। डायरेक्शन चूज कैसे करते हो, विजुअलाइजेशन से। सो दैट इज द मेंटल क्रिएशन, दैट इज हैबिट 2 इज द फर्स्ट और मेंटल क्रिएशन। हैबिट 3 इज अ सेकंड क्रिएशन विच इज द फिजिकल क्रिएशन। सो हैबिट 3 में अपन मैनेजमेंट में जा रहे हैं। अब मैनेजमेंट का मेन 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 इंपॉर्टेंस होता है prioritization. It's the fulfillment and actualization of the natural emergence of habit number 1 and 2. It's the exercise of independent will towards becoming principle centered. It's the day in, day out, movement by movement doing it. Habit 1 and 2 are absolutely essential and prerequisite to habit number 3. You can't become principle centered without first being aware of and developing your own proactive nature. Proactive nature का मतलब मैंने पहले भी बताया था, वापस रिपीट कर रही हूँ। Looking and focusing all your energy on the things which are in your control and not looking at things which are not in your control but you are concerned. जैसे इंडिया की जीडीपी बढ़नी चाहिए या मेरी वाइफ को ये करना चाहिए, पर वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपके कंसर्न में है। तो you do बट वो not, हमको हमको सर्कल कैसे ऑफ एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये हमारे कंट्रोल में? कभी कभी हम दिमाग में सोचते सोचते कहीं और वो पहुंच आप जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 करोगे ना तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी हैबिट राइट। नंबर 1 में। यू टू कांट, हाँ that पूछो। is to concentrate, I mean, on the circle of इन्फ्लुएंस, influence and यस, not on the circle of concern. हाँ. यस। सो ये चीज आपको समझ में जब तक नहीं आएगी जब तक आप वो चैप्टर नहीं करोगे। Correct. हाँ, you can't become principle centered without first being aware of your paradigms and understanding how to shift them and align them with principles. You can't become principle centered without a vision of or focus on a unique contribution that is yours to make. तो अपन ने ये देखा, तो जो अपन वैल्यूज क्रिएट करते हैं वो यूनिक टू योरसेल्फ होती है। तो जैसे मैंने क्रिएट किया था कंपैशन, अनुष्का ने कुछ और ही क्रिएट किया था, ऑनेस्टी, तो उसका वैल्यू ऑनेस्टी आया था। वैसे ही सेम गौरव जी ने कुछ और क्रिएट किया था। तो गरिमा, आप और नवीन जी आप देखना आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों चैप्टर कर लेना। बट विद दैट फाउंडेशन, एक एक डाउट है, बिजनेस रिलेटेड में हम क्या सोच सकते हैं? मतलब जैसे कि भी हॉनेस्टी बोला है आपने एग्जांपल, तो वो वो उसका है, अनुष्का एक पार्टिसिपेंट है, उसने क्रिएट किया ओके, था। राइट, तो सबका यूनिक ओके, होता है, तो आपको खुद का क्रिएट करना पड़ेगा। आपको जब वो एक्सरसाइज करोगे, बुक चैप्टर करोगे, आपको रियलाइज होगा कि व्हाट वैल्यू इज इम्पोर्टेंट टू यू, अंदर से आएगी ये बात, दिमाग ओके, से गॉट नहीं। इट, राइट राइट राइट, समझ गए, हाँ। थैंक यू। But with that foundation, you can become principle centered day in, day out, moment by living habit number 3, by practicing effective self management. So habit number 3 self management के ऊपर है। Management, remember, is clearly different from leadership. Leadership is primarily a high powered right brain activity. It's more of an art, visualization, and based on philosophy. You have to ask ultimate questions of life when you're dealing with personal leadership issues, जो अपने habit number 2 में किया है. But once you have dealt with those issues, once you have resolved them, you then have to manage yourself effectively to create a life congruent with your answers. The ability to manage well does not make much difference if you're not even in the right jungle. तो कौन से राइट जंगल में होना अपन ने हैबिट नंबर 2 में सीखा है, बट इफ यू आर इन द राइट जंगल इट मेक्स ऑल द डिफरेंस. In fact, the ability to manage well determines the quality and even the existence of the second creation. Management is breaking down the analysis, the sequencing, the specific application, and time bound left brain aspect of effective self government. My own maximum of self personal effectiveness is this: manage from the left, lead from the right. Left is the left brain and right is the right brain, जो अपन ने कल भी बुक में देखा था. The power of independent will. In addition to self-awareness, imagination, and conscience, it is the fourth human endowment, independent will, that will really make effective self-management possible. It is the ability to make decisions and choices and to act in accordance to them. It is the ability to act rather than to be acted upon. ये लाइन अपन ने पहले भी समझी थी.
It is the ability to act rather than to be acted upon, to proactively carry out the program we have developed through the other three endowments. अभी अपन क्या करते हैं, यार मेरी सर्कमस्टेंसेस ऐसी है, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा घर ऐसा, मेरा स्केड्यूल ऐसा, मुझसे नहीं होता, मैं जिम नहीं जा पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा. क्यों? क्योंकि अभी आपके सर्कमस्टेंसेस आप पे हावी हो रहे हैं, आप सर्कमस्टेंसेस पे हावी नहीं हो रहे. दैट मीन्स यू आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन योर सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशंस एंड योर ओन वे ऑफ बीइंग, जो जिससे अपन ने इंडिपेंडेंस हैबिट नंबर 1 एंड हैबिट नंबर 2 में सीखी थी. हाँ Anushka, I was really waiting for you. Welcome. The human will Thank is you amazing for thing. waiting for me. Yes, Sorry, मैं कुछ अपना हाँ, डॉक्यूमेंटेशन के लिए बाहर थी. ठीक है. We are doing habit number 3, put first things first. The human will is an amazing thing. Time after time, it has triumphed against unbelievable odds. The Helen Kellers of this world give dramatic evidence of the value, the power of independent will. But as we examine this endowment in the context of effective self management, we realize it's usually not that dramatic, visible, once in a lifetime, bootstrap effort that brings enduring success. So you have to learn how to use your self will. The degree to which we have developed our independent will in our everyday lives is measured by our personal integrity. Integrity is fundamentally the value we place on ourselves. It is our ability to make and keep commitments to ourselves, walk our talk. It's the honor to self, a fundamental part of character ethic, the essence of proactive growth. Leadership decides what first things are. Management put them first day by day, moment by moment. Management is discipline in carrying it out. Discipline drives from disciple. An overriding purpose to subordinate a goal or a person who represents that goal. आपकी फिलॉसफी वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स अगर सेट हो जाएगी तो आप प्रायोरिटाइज अच्छे से कर पाओगे. इन अदर वर्ड्स, इफ यू आर एन इफेक्टिव मैनेजर ऑफ योरसेल्फ, योर डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम विदिन. It is a function of your independent will. You are a disciple, a follower of your own deep values and your source. And you have the will, the integrity to subordinate your feelings and impulses and moods to those values. Isliye it's very important to create your own values in last chapter. Anishka, is it making sense to you? Because you did it yesterday. Yes. हाँ, तो आपने ऑनेस्टी क्रिएट की थी ना अपनी वैल्यू. Honesty and transparency, self-love. परफेक्ट. आप उसको मिशन स्टेटमेंट में लिखना इन डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ. One of my favorite essays is The Common Denominator of Success. He spent his life searching for one denominator that all successful people share. He found it isn't hard work, good luck, or astute human relations, though they are all important. The one factor that seemed to transcend all the rest of the embodies the essence of habit number 3, which is putting first things first, prioritizing. The successful people has the habit of doing the things failures don't like to do. They don't like doing them either necessarily, but their disliking is subordinated to the strength of their purpose. That subordination requires a purpose, a mission, a habit to clear sense of direction and a value, a burning yes inside that makes it possible to say no to other things. So आपका जो मिशन स्टेटमेंट अपन ने कल बनाया है उससे प्यार हो जाना चाहिए, उसको 100% सरेंडर करना चाहिए, such that even if we are not liking certain things, we will take decisions from those principles only. It also requires independent will, the power to do something when you don't want to do it, to be a function of your values rather than the function of your impulse or desire at any given moment. It's the power to act with integrity to your proactive first creation. So अपनी को दिमाग में क्लियर विजन
विजुलाइज करना है, जैसे हेल्थ में जिम जाना है, तो आप पहले से क्रिएट कर लो, अच्छा यार मुझे जिम जाने का मन नहीं होता सुबह उठने के बाद, राइट, पर मुझे जिम जाना है, तो आप विजुलाइज करोगे मैं उठ रही हूँ, फिर मैं उठ गई, फिर मेरे को ऐसा लग रहा है यार अब मैं जिम कैसे जाऊं, तो उसमें आप विजुलाइज करोगे कि अच्छा आई विल बी कंपैशनेट टू माई सेल्फ, आई विल बी एम्पैथिक एंड काइंड, कि मेरा मन नहीं हो रहा, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, but is it empowering to me that I'm not going to gym? No, no, yaar, it doesn't. So मेरी value क्या है? Being empowered. Okay. So how will you be empowered? I think if I organize things in advance for gym, like मैं अपनी bottle पहले ready करके रखूंगी, कपड़े ready करके रखूंगी, shoes ready करके रखूंगी, time fix कर लूंगी कि 8 to 9 मुझे gym जाना ही जाना है. So that's in weekly scheduling. Okay. Then I will go to gym. Are you understanding? So you use your visualization of things which are difficult to you. You visualize कि आप उसको overcome कर रहे हो. अपनी values से present हो जाओ, what values you created, and then you will be able to do it. You will be able to prioritize, because in your priority, you have to prioritize your values and not impulses and feelings and desires. Is it making sense? Yes, yes. Oh, perfect. Four generations of time management. In Habit 3, we are dealing with many of the questions addressed in the field of life and time management. As a long time student of this fascinating field, I'm personally persuaded that the essence of best thinking in the area of time management can be captured in single phrase: organize and execute around priorities. Organize and execute around priorities. So we have to write what our priorities are. That phrase represents the evolution of three generations of time management theory. Personal management has evolved in the pattern of similar to many other areas of human endeavor. Likewise, in the area of time management, each generation builds on it one before it. Each one moves towards greater control of life. The first generation was about notes and checklist, an effort to give some, recognition and inclusiveness to many demands on time and energy. Second generation was about calendars and appointment books. Third generation reflects the current time management field. It adds to those preceding generations the important idea of prioritization, of clarifying values, of comparing the relative worth of activities based on their relationship to those values. In addition, it focuses on setting goals, specific intermediate, and short term targets towards which time and energy would be directed in harmony with values. It also includes concepts of daily planning, of making a specific plan to accomplish those goals and activities around to be a greatest worth. तो ये बोल रहा है कि अभी तक सबसे पहले क्या चेकलिस्ट थी टाइम मैनेजमेंट में, दूसरा फिर कैलेंडर बुकिंग आ गई, है ना, ये बोल रहा है उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटाइजेशन. अब आपके पास 10 एक्टिविटी करने के लिए, सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू डू ऑल टोज 10 एक्टिविटीज, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू टू नो कि टॉप 3 प्रायोरिटी क्या है आपकी लाइफ में, और उनको स्केड्यूल करके उनको करना. While the third generation had made a significant contribution, people have begun to realize that efficient scheduling and control of time are often counterproductive. The efficiency focus creates expectations that clash with the opportunities to develop rich relationships, to meet human needs, to enjoy spontaneous movements on a daily basis. अभी बोल रहा है efficient होने का क्या मतलब है कि मैंने आज 10 काम खत्म कर लिए जी, राइट, बट वो है ना, डजंट रियली वर्क इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स. बिकॉज अगर आपको डीप रिच रिलेशनशिप चाहिए, सो इट्स नॉट अबाउट कि आप 10 लोगों से मिल रहे हो, इट्स अबाउट कि आपने 2 जनों को कितना डीपली नो किया, तो इट्स काउंटर प्रोडक्टिव. As a result, many people have become turned off by time management programs and planners that make them feel too scheduled, too restricted, and throw that baby out of the bath water. इसलिए इट्स लोगों को ये टाइम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स पसंद नहीं आते, बिकॉज दे फील वेरी केज्ड इन देम एंड दे फील लाइफ में से लाइफ चली गई. But there is an emerging fourth generation that is a different kind. It recognizes that time management is really a misnomer. The challenge is not managing time, but to manage ourselves.
सो अब टाइम मैनेजमेंट में नहीं जा रहे, अपन को चेंज करना है फंडामेंटल फ्रॉम मैनेजिंग ourselves, managing time to managing ourselves. Satisfaction is a function of expectation as well as realization. And expectation and satisfaction lies in the circle of influence. Rather than focusing on things and time, fourth generation expectations focus on preserving and enhancing relationships, on accomplishing results, in short, maintaining P and PC balance. Generations of time management: first, notes and checklist; second, calendars and appointment books; third, goal setting and daily planning; fourth was self management and balance. अब ये बहुत 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 ब्यूटीफुल है चार्ट. अपन की लाइफ में चार तरह के है ना काम होते हैं: अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट. जो अर्जेंट भी होते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं, वो नेसेसिटी हो जाता है. इमरजेंसी मीटिंग, लास्ट मिनट डेडलाइंस, प्रेसिंग प्रॉब्लम्स, अनफोर्सीन इवेंट्स. फिर वो भी है ना टास्क होते हैं जो नॉट अर्जेंट होते हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. वो इफेक्टिवनेस राइज करते हैं, जैसे प्रोएक्टिव वर्क, इंपॉर्टेंट गोल्स, क्रिएटिव थिंकिंग, प्लानिंग एंड प्रिवेंशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग, लर्निंग एंड रिन्यूअल, reaction. Relationship building will never be urgent, but it's very important. Planning will never be urgent, but I think it's very very important. Proactive work will never be urgent, but very very important. Reading this book is not urgent, but very very important. Mama, half an hour में बात. Are you understanding? Reading this book is not urgent but important because it is developing your production capability. डिस्ट्रैक्शन, सो बहुत से वर्क होते हैं जो अर्जेंट होते हैं पर इंपॉर्टेंट नहीं होते. नीडलेस इंटरप्शन, अननेसेसरी रिपोर्ट्स, अदर पीपल्स माइनर इश्यूज, अनइम्पॉर्टेंट मेल्स, टास्क, फोन कॉल, स्टेटस रिपोर्ट्स, ये वो. एंड वेस्ट, जो इंपॉर्टेंट भी नहीं होते और अर्जेंट भी नहीं होते. ट्रिवियल वर्क, अवॉइडेंस एक्टिविटीज, एक्सेसिव रिलैक्सेशन, टेलीविजन, गेमिंग, गॉसिप एक्सेट्रा. अब आपको देखना है आप किस क्वाड्रेंट में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो. बहुत से लोग बहुत बिजी होते हैं क्योंकि वो हर तरह का काम कर रहे होते हैं. अर्जेंट वर्क भी कर रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क भी कर रहे होते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट बट वेरी अर्जेंट वर्क भी कर रहे होते हैं. कि आज ये क्राइसिस होगी, मैंने फायर फाइटिंग में घुस गया, आज ये क्राइसिस होगी, मैं फायर फाइटिंग में घुस गया. तो वो अर्जेंट ऑफ कोर्स होगा पर वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उससे आपको प्रोग्रेस नहीं मिलेगी लाइफ में. The essential focus of the fourth generation of management can be captured in the time management matrix जो अपन ने देखा है. Basically, we spend time in one of four ways. The two factors define activity: urgent and important. Urgent means it requires immediate action, that is now. Urgent things act on us. तो कोई भी जैसे urgent फोन बजा, कोई फोन बजता है तो अपन को क्या लगता है, अर्जेंसी क्रिएट हो गई, तो अपन झटपट उठा लेते हैं, राइट? वो अर्जेंट है बट मे बी नॉट इम्पोर्टेंट. So you will waste your time in picking up a phone and talking to a person which is urgent but not important. Most people can't stand the thought of just allowing the phone to ring. You could spend hours preparing materials, you could get all dressed up and travel to a person's office to discuss a particular issue. But if the phone were to ring while you were there, it would generally take precedence over your personal visit. If you were to phone someone, there aren't many people who would say, I will get to you in 15 minutes, just hold. But most people would probably let you wait in office for at least that long while they complete a telephonic conversation with someone else. Urgent matters are usually visible. They press on us. They insist on action. They often popular with others. They are usually right in front of us. Often they are pleasant, easy, and fun to do, but so often they are unimportant. Importance, on the other hand, has to do with results. If something is important, it contributes to your mission, your values, your high priority goals. We react to urgent matters. Important matters that are not urgent require more initiative, more proactivity.
We must act to seize the opportunity to make things happen. If we don't practice habit number 2, which is like have a clear idea of what is important, of the results we desire in our lives, we are easily diverted into responding to the urgent. Gaurav ji, Gaurav तो है नहीं, sorry, नवीन, आप बोल रहे Yes, ना yes, but हमारे वीकली स्केड्यूलिंग नहीं हो पा रही, yes. क्यों? क्योंकि आप अर्जेंट मैटर में फंसे हुए होगे। देखो, इंपॉर्टेंट नहीं होगा पर अर्जेंट होगा। बहुत सारे चीजें रहते हैं, जैसे वी उसको हम क्लैरिफाई, मतलब वी आर नॉट एबल टू क्लैरिफाई। वो जैसे आपने चार्ट बताया था, वी हैव टू क्लैरिफाई एंड उसके हिसाब से वर्क करना पड़ेगा। हाँ, Which वही is वही प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। yes, yes, yes. हाँ, लुक जैसे फॉर अ कि वन मोमेंट मोर डाउट, अगर अभी एज आई टोल्ड स्टार्टिंग, अभी जिम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, व्हाट डू यू से फॉर हेल्थ? जिमिंग इज नॉट अर्जेंट ओके, बट वेरी अच्छा, इंपॉर्टेंट। अगर आपकी वैल्यू है कि यू वांट टू बी फिट एंड हेल्दी, देन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। But it is ओके, one thing ओके। that will bring effectiveness in your life. See the chart. क्लासिफिकेशन करना थोड़ा चैलेंजिंग है, बट आई थिंक उस पे थोड़ा करना पड़ेगा आप काम। इसमें लिखोगे ना, आप इसको देखो, जो अर्जेंट काम होता है वो डिस्ट्रैक्शन भी होता है, नॉट इम्पोर्टेंट भी होता है। और जो अर्जेंट काम राइट, होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, वो आप डेलीगेट भी कर सकते हो। करेक्ट, समझ रहे हो? पर जो इम्पोर्टेंट काम है और नॉन अर्जेंट है, जैसे बुक रीडिंग हो गई, जिमिंग हो गया, आप इसको डेलीगेट कैसे करोगे? ये तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट, जो लास्ट मिनट मीटिंग हो गई, डेडलाइंस हो गई, प्रेसिंग प्रॉब्लम्स हो गई, फायर फाइटिंग हो गई, वो अर्जेंट भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, पर वो डेलीगेट हो सकता है। गॉट इट, गॉट बस इट। ये जो क्वाड्रेंट में आ रहा है ना काम, जो इम्पोर्टेंट है पर नॉट अर्जेंट है, वो आप कभी डेलीगेट नहीं यस, कर सकते। जैसे रिलेशनशिप बिल्डिंग कभी करेक्ट, अर्जेंट नहीं होगी। अपनी वाइफ के साथ यस, रिलेशनशिप यस, बिल्डिंग कभी अर्जेंट नहीं होगी, पर बहुत सही इंपॉर्टेंट है। बात, सेम विद इट विल नेवर बी अर्जेंट गॉट बट इट, ऑलवेज बी इम्पोर्टेंट। बाकी सब इट्स क्लियर वेस्ट नाउ। है, डिस्ट्रैक्शन ऑफ टाइम है, नेसेसरी लगेगा, पर वो डिस्ट्रैक्शन और वेस्ट ऑफ टाइम है इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी। ट्रू, ट्रू, As long as you focus on quadrant 1, it keeps you getting bigger and bigger until it dominates you. तो ये बोल रहा है, अगर आप नेसेसरी अर्जेंट और इंपॉर्टेंट वर्क में जाओगे ना, तो ये आपके सर्कमस्टेंसेस आपको डोमिनेट करने लग जाएंगे। It is like a pounding surf. A huge problem comes and knocks you down and you're wiped out. You struggle back up only to face another one and that knocks you down and slams you to the ground. जो अपन राहुल सर बात करते हैं कि फायर फाइटिंग में लगे रहते हैं, पीपल मैनेजमेंट में। Some people are literally beaten up by problems all day, every day. The only relief they have is in escaping to the not important, not urgent activities of quadrant 4. So when you look at their total metrics, 90% of their time is in quadrant 1, which is urgent and important. Most of the remaining 10% is in quadrant 4, which is TV watching or relaxing or something, with only negligible attention paid to quadrant 2 and 3. That's how people who manage their lives by crisis live. आप क्राइसिस मैनेजमेंट में लगे रहते हो और आप जिंदगी नहीं जीते हो। वापस देखते हैं ये क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 3 क्या है? क्वाड्रेंट 3 है डिस्ट्रैक्शन, कोई अनइम्पोर्टेंट और अनअर्जेंट मेल्स हो, कुछ हो, माइनर इश्यूज हो, स्टेटस हो, पोस्ट हो। और क्वाड्रेंट 2 को तो अपन बिल्कुल ही टाइम नहीं देते, जो अपना मेन वन थिंग काम होता है। नेसेसरी और अर्जेंट में ये फायर फाइटिंग होती रहती है। मम्मी बोलती है ये कर दे यार प्लीज, ये अर्जेंट है, तो वो कहाँ से आ गया? वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा पर अर्जेंट होगा, तो वो डिस्ट्रैक्शन में आ जाएगा, या यू नो फायर फाइटिंग में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट भी होगा मम्मी के लिए, पर वो आपके लिए लास्ट मिनट डेडलाइंस हो गई, आपको डेलीगेट कर दिया गया काम, अनफोर्सी इवेंट्स हो गए, को हॉस्पिटल चले गया और पहुंच गया, वो अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, पर उससे आपकी लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई इफेक्टिवनेस क्रिएट नहीं होगी। इज इट क्लियर? एम आई कम्युनिकेटिंग? Yes, teacher. yes, yes, very clear. To paraphrase Peter Drucker, effective people are not problem minded, they are opportunity minded.
they feed opportunities and starve problems. तो ये बोल रहा है अकॉर्डिंग ट्रू में अगर काम करना है तो आपको प्रॉब्लम्स को स्टार्व करना पड़ेगा. आप अटेंशन नहीं दोगे प्रॉब्लम्स को, आप अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाओगे. दे थिंक प्रिवेंटिवली. They have genuine quadrant 1 crisis and emergencies that require immediate attention, but the number is comparatively small. क्यों? क्योंकि वो they keep a balance between P and PC. So हमने P and PC फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था. But not urgent. High leverage capacity building activities of quadrant 2. PNPC का मतलब है गोल्डन एग एंड द गूज. अगर आप गोल्डन एग की प्रोडक्शन में फोकस कर रहे हो और गोल्डन गूज जो है, जो अंडा दे रही है, उसकी मेंटेनेंस में नहीं लगा रहे, उसको डेवलप नहीं कर रहे, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज नहीं कर रहे, तो गोल्डन गूज मर जाएगी और अंडा भी मर जाएगा. So it's very important to focus on quadrant 2 and prioritize quadrant 2, which is important but not urgent. With the time management matrix in mind, take a moment now and consider how you answered the questions at the beginning of this chapter. What quadrant do they fit in? अब आप देखो, आपने बोला कि मेरा है ना, मेरे को जिम जाऊंगा ना, और मैं ये क्या बोला आपने? जिम कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 4 जिम 5 बिल्डिंग ब्लॉक. 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स. ये दोनों कौन से क्वाड्रेंट के काम है? यस. कौन से क्वाड्रेंट के काम है? Second. Important but not urgent. But not. Yes. Second, And that second will quadrant. actually bring effectiveness. Can you see? But is okay. It's not urgent. Going to gym is not urgent. 5 building blocks is not urgent, but very important for effectiveness, which is weekly scheduling, planning, prevention, relationship building, system planning, goal setting, mission statement, all of that. System creation, not urgent, but important. तो राहुल जैन कहाँ काम कर रहा है? इस पे, क्वाड्रेंट 2 पे. Anushka, Yes. can you see? Yes, very clear. What is your quadrant 2? Like what you said, planning, relationship building with even customers, team, personal relationships. तो even जो हम कस्टमर से मीटिंग कर रहे हैं, Question पूछे थे, what is the one thing you can do that you're हाँ. not doing right now, that if you did it on regular basis, that would make a tremendous positive difference in your personal life and professional life? रेगुलर बेसिस पे क्या कर सकते हो? कौन सी हैबिट है जो आप करोगे तो आपकी लाइफ में ट्रेमेंडस इफेक्ट आएगा? मैंने क्रिएट किया था जिमिंग एंड वीकली स्केड्यूलिंग. और गरिमा, यू देयर? Yes, I'm here. आपका क्या है? Newspaper, reading newspaper. रीडिंग न्यूज़पेपर. और Yeah. एक और चीज कोई? बिजनेस में अगर आप बोलो तो लाइक कंसंट्रेशन मोर टुवर्ड्स सोशल रिकॉग्निशन. वो कैसे आएगा? हैबिट क्या आएगी उसमें? What can you do? One thing that you can do that will really impact, which is not urgent but important. प्लानिंग एंड प्रिवेंशन. नहीं, आप इसमें से मत चूज करो, आप अपना एक्शन okay. दिमाग में सोचो. अच्छा. What action can you take? One action. Mine will be weekly scheduling and hotel check-in. Perfect. Not urgent but very important. Mine will be like maybe I'm an interior designer, so I don't visit office. So visiting office on a regular basis. Yes. Very nice. Very nice. Yeah. Very nice. So you can create, you can prioritize now. Look at the moment 4 quadrants in the time management matrix. Quadrant 1 is both urgent and important. It deals with significant results that require immediate action. We usually call it the crisis, the problems. Quadrant 1 activities in our life consumes many people, problem-minded people, deadline-driven producers होते हैं. As long as you focus on quadrant 1, it keeps you getting bigger. It will dominate you. ये अपन ने पढ़ लिया.
Quadrant 2 is a heart of effective personal management. It deals with things that are not urgent but are important. It deals with things like building relationship, writing a personal mission statement, long range planning, exercising, preventive maintenance, preparation, all those things we know we need to do, but somehow seldom get around to doing because they aren't urgent. To paraphrase Peter Drucker, effective people are not problem minded, they are opportunity minded. They feed opportunities and starve problems. They think preventively. They are genuine quadrant one crisis. They have genuine quadrant one crisis and emergencies that require immediate attention. But the number is comparatively small because they keep P and PC balance. दे आर सो आप क्वाड्रेंट टू के काम क्यों नहीं करते बिकॉज वो इंपॉर्टेंट होते हैं पर वो अर्जेंट नहीं होते नाउ लुक अगेन एट द नेचर ऑफ दोज क्वेश्चंस what one thing could you do in your personal and professional life that if you did it on a regular basis would make a tremendous positive difference in your life? Quadrant 2 activities have that kind of impact. Our effectiveness takes quantum leaps when we do them. If you were to do one thing in your professional work that you know would have enormous positive effects on the results, what would it be? It's always comes in the quadrant 2 activity. We did an analysis of the time they were spending on that activity. It was less than 5%. They had good reasons, problems, one right after the other another. They had reports to make out, meetings to go to, phone calls, this and that and this and that. Generally quadrant 1 अपन इतना ही कंज्यूम हो जाते हैं कि अपन quadrant 2 पे फोकस नहीं करते और quadrant 1 अपन को कहीं नहीं लेके जाता. अपन हमेशा फंसे रहते हैं. We are always dependent on our circumstances to give us urgencies and emergencies. अपन सोच ही नहीं पाते क्योंकि वी आर डिपेंडेंट. जो आएगा देखा जाएगा, जो होगा कर लेंगे, जो इमरजेंसी होगी उसकी फायर फाइटिंग करके खत्म कर लेंगे. They were spending very little time with the store managers and the time they did spend was filled with negative energy. अब फायर फाइटिंग करोगे, अर्जेंसी में काम करोगे तो हमेशा एंजाइटी में और उसमें रहोगे कि यार ये हो गया, यार आज ये हो गया, यार आज ये सॉल्व करना है, आज ये करना है, आज वो करना है, आज बेटे का ये करवाना है, आज वो कराना है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी कंट्रोल. You are governed by your circumstances. The circumstances are leading you. You are not leading your circumstances if you are working on quadrant 1. The store owners were struggling for survival, let alone prosperity. They had employment problems, cost problems, inventory problems, and host of other problems. Most of them had no training in management at all. So the owners decided to be proactive. They determined their purpose, their values, their priorities. In harmony with those priorities, they decided to spend about one third of their time in helping relationship with their tenants. In working with the organization for about a year and a half, I saw climb to about 20%, which represented more than fourfold increase. The effect was dramatic and profound. By focusing on relationships and results rather than time and methods, the number went up. इन शॉर्ट ये बोल रहा है क्वाड्रेंट 2 की एक्सरसाइजेस करोगे तो आपकी इफेक्टिवनेस और आपकी लाइफ में रॉकेट लग जाएंगे. Whether you are student at the university, a worker in the assembly line, a homemaker, a fashion designer, or president of a company, I believe that if you were to ask what lies in quadrant 2 and cultivate the proactivity to go after it, you would find the same results. Your effectiveness would increase dramatically. Your crises and problems would shrink to manageable proportions because you would be thinking ahead, working on the roots, doing the preventive things that keep situations from developing into crisis in the first place. In time management jargon, this is called Pareto principle. 80% of the results flow out of 20% of your activities. जो ये 80-20 का रूल है ना, वो यही से आता है. जो आप क्वाड्रेंट 2 की एक्टिविटीज है ना, वो 20% ऐसी एक्टिविटीज है, अगर आप वो करोगे तो वहां से 80% रिजल्ट्स आएंगे. What it takes to say no. The only place to get time for quadrant 2 in the beginning is from quadrant 3 and 4. You can't ignore the urgent and important activities of quadrant 1
although you can shrink its size by being preventive and proactive, but initial time for quadrant 2 has to come from quadrant 3 and quadrant 4 activities. So you need to learn to say no to certain things. You have to be proactive on the quadrant 2, because quadrant 1 and quadrant 3 works on you to say yes to important quadrant 2 priorities. You have to learn to say no to other activities. Sometimes you have to say no to urgent matters also. We will end here. Hi, any questions, any sharing? How for you? Hello? एक बार कौन बोल रहा हाँ है? ऋचा जी, हाँ जी. How was the chapter for you? We will it was good actually. tomorrow. Yes, it was good actually. Did you get any value today? Some clarity? Yes. Little bit important, not important जिसमें है वो हम करते हैं. That is very challenging. If we manage properly, I think we get into the right track. हाँ, it's Now saying that आपने you जो have to बोला learn to जो say no. You have to learn to say and उसमें no, और एक जो which are not that is important. there and one more thing जो important है urgent है उसके ऊपर ही हम हमेशा रहते हैं. हाँ. Whereas not urgent और important को हम ध्यान नहीं देते. Which we are वो उस पे ध्यान नहीं देते. It will become automatically urgent and important over that period when we are not completing it. That's true. तो यही बोल रहे हैं, अगर आप क्वाड्रेंट 2 में काम करोगे तो क्वाड्रेंट 1 की Yes. एक्टिविटीज कम हो जाएंगी, और क्वाड्रेंट 2, 3 एंड 4 को तो आपको इग्नोर ही करना है बिल्कुल. Yes. आपको अर्जेंसी को रिस्पॉन्ड नहीं करना. यू हैव टू बी इन स्केड्यूल एंड यू हैव टू प्रायोरिटाइज. True. Oh, I think we have to make a system of एक दिन we have to complete one task of both the thing, urgent, important and not important. वो complete करते जाएंगे तो we will remove our list जो बहुत सारा pending रहता है. नहीं 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 नहीं, ये बोल रहा है आप प्लीज सारे कामों में मत जाओ, आप प्रायोरिटाइज करो. Okay. Only do which are important to you. Ignore doing and completing a checklist. If you go in Okay. check, आप फिर फंस जाओगे. Okay. So it's not about doing everything. It's about doing what's important. Putting 80-20. first 80-20, which will come from quadrant 2. This is Right. skincare. रोज स्किन केयर करना, ढंग से नहाना, पूजा पाठ करना. It's never urgent, but it's important. उससे आपको जिंदगी भर के लिए शक्ति मिलती है. आपको एक सही बात है. लेवल हो जाता है. आप जिम जाओगे तो आप लेवल अप हो जाओगे. It's never urgent, but very important. तो आप अभी बैठकर लिस्ट बना लेना, काम कर लेना, मजा आ Sure. जाएगा. We will continue tomorrow. पर्सनल स्टेटमेंट नहीं Definitely. बनाना आज दिशा. हाँ रिचा. रिचा पर्सनल स्टेटमेंट नहीं बनाना. पर्सनल स्टेटमेंट कल बन गया था. कल हमने वैल्यूज बनाई थी. उसी से पर्सनल स्टेटमेंट आपको खुद को बनाना है. ओके ठीक है. देख Thank लेना, कर लेना. वो वैल्यू से ही बन जाएगा. पर्सनल स्टेटमेंट जैसे मैंने बोला ना, आई विल कीप कंपैशन, एम्पैथी एंड गुडविल फॉर ऑल अबव माय लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स. थैंक यू रिचा. Okay, perfect. See you tomorrow. Bye. Thank you very much, Risha ji. Thank you.